Esports has evolved from a niche pastime to a global phenomenon, captivating millions of players and fans across the world. Competitive video gaming, which once existed in the shadows of traditional esports, is now a major cultural and economic force. This transformation has been driven by various organizations and international sporting bodies, with the International Esports Federation, the Asian Games, and the International Olympic Committee playing pivotal roles in promoting and legitimizing esports as a competitive discipline. The inclusion of esports in major multi-sports events like the Asian Games, which saw athletes competing in 8 major games like League of Legends, Arena of Valor, Dota 2, among others. And potentially, the Olympic marks a significant step towards recognizing gaming as a legitimate sport, and the IESF is the key in stirring this movement. India is now set to host major multinational and multi game title esports tournaments after a historic partnership with the International Esports Federation and Skillhub Online Gaming Federation. Hello and welcome to another episode of Beyond Scoreboard, a podcast show where we get in conversation related to sports, esports and much more. We have Mr. Boban Tutovsky with us today. Hello sir, how are you? Hello. You're in India right now. And how is India treating you? Well, I've only been here less than 10 hours, but until now I've seen magnitude of emotions and hospitality and professionalism, and I must say that I am very satisfied and looking forward to doing more and more in this country. Wonderful, sir. While speaking to you, you mentioned about your background in filmmaking and production. How did esports happen? Well, since I was a kid, I was a gamer my entire life. I used to play all the video games and had the issues the kids have today with their parents that they're saying, oh, you're playing too much games, you should, learn more things. But in the meantime, what happened is actually all the skills from working in journalism, from working in TV station, then working in editing, in production, in filming, in TV show creation, even in sales, in services, computers, all those skills actually are transferable into esports. Because in esports you need to have quite a lot of big capacity and big understanding, so you can actually produce content and the world championships and all the events that we are doing. So they become quite useful in part of my life, and I didn't learn them in school. So certainly. So what all games did you begin with? Well, I begin with Tetris. Okay. Because I'm a bit older generation, but after that, let's say when proper gaming consoles and computers developed, my most favorite game was Age of Empires, which I play until today. And then, of course, all the most famous titles like Counter-Strike, Call of Duty, Battlefield, Command and Conquer. Those were the games that I used to play most often. For me, it was Need for Speed. Oh yeah, Need for Speed, of course, yes. Underground, Hot Pursuit, all those, yeah. If we talk about the federation, it was established in 2008. Yes. And it was an era where gaming tournament was not in the scenario as much. But then the federation led the foundation of the first tournament being held in South Korea in 2009. How do you see the scenario now comparing to 2009 to 2024? Well, tournaments happened before. Before ISF, there was World Cyber Games. It was the event that actually brought me into esports, where for the first time I saw people taking their flags on stage like we see on the Olympics, but actually for esports. And even in 2005, when I saw that event, I was sure that this is going to be a sport, that this is going to be a legitimate business and legitimate sport in the future. And that's when I actually focused my energy to develop this. ISF was created in 2008 because the setup and what the institutions needed was not possible to be done from the previous organizer. So mainly all the people that were contributing and competing in World Cyber Games shifted into ISF. It took a while for the event to become global.
We all know that in South Korea, esports is like cricket in India. Right. It's very popular. It's their number one sport, let's say. They're best at it, and especially League of Legends. So they have been acting as the center of esports for the world, and everything started to spread from there many, many years ago. Now we see many other countries showing up and putting in efforts into developing esports, like Saudi Arabia, we see Poland with Katowice, we see the United States, and we see a lot of countries and cities building venues and everything. And now we are, of course, seeing after what happened on the Asian Games, we also see that India is showing interest to develop competitions. So hopefully we will see more and more of those in India. Esports definitely has a great potential in building a global economy, and since it's a billion-dollar industry, the prize pool is insane. And what happened in Riyadh, the World Esports Cup which happened, what do you have to talk about that? The Esports World Cup is a competition which is different from what we are doing as ISF. Esports World Cup is a competition of professional teams, something like, let's say, in football Champions League, rather than countries. The way the prize fund, $60 million, that's a huge amount of money to be invested, and it's uncomparable to what any other country or many other sports can actually provide. It's good for esports because it brought the attention from people that never even heard about esports. But when people hear, oh, $60 million, wait, what is this, for gaming? For the thing that my kid is doing in his room? And then it spreads awareness that esports is actually a good tool that can help you build your own career, and with that contribute to your country, to your region, to your city, depends where you live. And it attracts a lot of, also a lot of companies, a lot of brands. Certainly. As the Federation, what is it doing to promote esports at the grassroots level in the developing countries like India? Well, the most important part of what ISF is doing is actually supporting the national federations to organize qualifiers. So each national federation, before participating in a world championship, has to create and organize national qualifiers. And as we know, professional teams and players that are on big salaries don't participate in this event. So this is something that actually gives an opportunity to all the amateurs and grassroots to compete and to strive to become their national champion, so they can play on the regionals or on the world championship. Right. So with esports growing rapidly, how does Indian federations like SOGF plan to engage Indian talent and develop a competitive yet inclusive ecosystem leading up to World Esports Masters? I think that by organizing, communicating with teams, so the World Esports Masters is also something that is different. It's not country-based, it's team-based. So it will, what is the essence of esport is any team. So it will facilitate creation of teams, because there are a lot of athletes and gamers, esports enthusiasts, they don't have teams. But now when they see an opportunity that if they participate as a team, they have a chance to represent their region or their club or their sponsors, however they're called, on an international competition, it will give them a lot more energy and give them a big boost to actually compete and practice as a team. This, of course, works together on teamwork, planning, strategy, execution, dedication. So it works on a lot of different type of energies and skills that everybody that participates will develop. So we are trying to make it more inclusive. So I want to know, how is the Federation working with the government bodies to standardize and make rules and legitimize the esports in every country? So in order to start creating rules and regulations, first you need to understand how the sporting system works in a country. So this is our first, let's say ISF, this is the first time of coming in India. This is the first time we're hearing, and we are signing this kind of an agreement, and starting to work with clubs, starting to work with teams. I believe that the community itself will become, because esports is community driven, that is very important to understand. So the plan for the World Esport Masters is that it will be teams competing amongst each other to be the best and to compete with other 15 international teams. So what we are trying to do is via the IP of IESF
to find a way to engage with teams and, as you said, be more inclusive to those that don't have the capacity to qualify and to compete on big competitions. So we as ISF want to give those grassroots levels an opportunity to actually compete on the big stage. As you spoke about technology, there's an advancement in artificial intelligence, blockchain, and everything around esports. So how does your federation see it as a challenge, or they're using it in their forte? It's not a challenge at all. It's actually a facilitator for esports. So it will help around, I don't know, competition platforms, organizing a tournament, broadcast, so all the tools that we are struggling to find or that are very expensive, any kind of new technology or AI being implemented can actually help and make it easier even for non-professionals to have a professional output and you know, to have the opportunity to actually do something more without buying expensive equipment, without going to expensive courses, and being able to actually produce their own competition. Yeah, basically if we talk about MOBA games also, can you talk more on that? How it can be part of esports game as well? Yes, I mean, having a mobile esports title doesn't change anything for the viewing experience of the viewers. The competitors, whether they're holding a joypad for PlayStation, it's a mouse and keyboard for computer, or a mobile phone and they're competing. As you can see, it's very similar. The screen, yes, it's smaller, but it has a huge advantage. It's accessible for everyone. Accessible. So that's why mobile gaming is on the rise, because the gamers actually that can compete are using a device that is very accessible to them. But the experience of the viewers, of the audience, of their fans is exactly the same, because what you're watching on the screen is actually a full screen game, just like you're watching, let's say, I don't know, Mobile Legends. If you compare it to League of Legends, when you watch on the screen, for someone who is not coming from esport, it looks the same, the experience is the same. So how is the experience of gaming from online to offline? Oh, very different. Very different, because once you are online, from playing from your home or from a boot camp or from a club, you're here with your friends, it's quiet, it's a controlled environment. And you don't feel the level of stress and pressure that you feel when you're an offline event. Yeah, there's a thrill of the audience. Yes, the thrill of the audience, the sound, the weather, the control, the new environment for you. So it does, we've seen a lot of good players lose because they were in front of an audience, or because it was too loud, or the chair is different, or they're not used to the setup, because that's also part of the game. Like in football, you need to adjust to different type of grass. The grass is not the same everywhere in the world. We know different fields are in England or in my country. It's always different. So, but we've also seen players being motivated, especially when they play in their home country. Yeah. They get even more motivated to play in front of their audience and showcase their skills. And when they hear the cheers and everything, it actually gives them extra boost. Especially in the mega events like Asian Games, Hanzhao, where the athletes represented their country. Yeah. So I'm sure the thrill must be there. So talking about it being a medal event now, and IOC has now agreed to include esports in the Olympics as well. So what do you have to talk about that? How it can be compared to a traditional sport also, wherein cricket, football and hockey and such games have such popularity. So how does one battle that? Well, nobody needs to battle that. We all need to embrace that. And just for clarification, it's a separate event from the Olympics. So it's an Olympic esport games. Okay. It's not that esports will be part of the Olympics in Los Angeles. We don't know yet. Maybe they will be, maybe they won't be. But for now, it's a separate event because esports is very new. It's very young. Even the International Olympic Committee, even we as ISF, working with 140 countries, it's not easy to make sure that every country follows the rules and the regulations, because also the national federations need a lot of boosting and support to properly develop, because we are only as strong as our members are strong and have capacity. Same goes for IOC in esports. The national Olympic committees of the world, around 50 that have recognized esports federations, for them it's easy. They can just go to the National Federation for Esports and tell them to organize an event. But that means it's only 50. We have 200 countries, almost around 200 countries in the world.
So there is quite a lot of work to do, and this is a good start. This is a good initiative from ISF, from IOC, from everybody to see esports on big stages. And the more and more opportunities the athletes have, the more and more the sport will grow. Right, so for an esports athlete, cognitive skill is very important, and for that, mental training is important. Fitness is also important. So, how does, as a federation, take care of the athletes who would be participating? The best case scenarios is to always have a coach, but not only coach for the game, but also to have a coach for physical and mental health that will give you what's the best food, what's the best exercise, because you don't need to go and lift weights, but there are some physical exercises that actually help in better performance because you're sitting, and sometimes they sit 5-6 hours playing per day, which is not easy. So there are different types of tactics and trainings that national federations are trying to transfer to the athletes. Not all of the athletes are listening, of course, it's still too young, because in all sports you start practicing it when you're 4, 5, 6 years. Right. Esports, you get the chance you have to start working professional is after 14. Okay. So by then you already have your skill set, you already want to say no to everybody, so it takes time. The trend is growing, but in 5 to 10 years, how do you see esports growing globally? I believe that esports needs a bit more structure, a bit more sustainability, and a bit more stability and consistency. But as a community-driven sport, those are things that are not easily manageable in order not to take away the beauty of it. Because the beauty of it, because you never know which title is going to be more popular next year, which athlete is going to be, which gamer, who is going to be number one, who is going to be the next mega star. So mix and perfect balance of those two. I think that in the next 5 to 10 years, it will be recognized as a sport in more than, currently it's around 60 countries. Some are IOC, as I told you, some are Olympic committees, some are ministries of sport. But I see that in the 5 to 10 years from now, it will be more than 120 countries. So we are looking into doubling that number where esports will be recognized, and of course see more and more international competitions, friendly matches especially, that help athletes get a lot of confidence. Definitely. So, any message for the Indian audience watching this podcast right now? Yes, I want to see India on the international stage. I want to see more and more Indian athletes compete, and because India is quite a big country, and we know that there are quite a lot of good athletes, but that is even more complex for them. I know it's harder for them to reach the top and actually go and represent, but keep practicing and also game responsibly always. Rightly said, sir. Thank you so much, sir, for coming to the podcast, and I hope you have a wonderful stay in India. Thank you. कॉन्वर्सेशन आज फिर से हम ई स्पोर्ट्स के बारे में आगे बढ़ाएंगे. सर, आज की मीटिंग की बात करें, उसके एजेंडा की बात करें, अग्रीमेंट साइन हुआ है SOGF और इंटरनेशनल ई स्पोर्ट्स फेडरेशन के साथ में. इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताइए. So, International Esports Federation is the largest organization in this particular area, and we wanted to enter into a relationship, and that's why we entered into an agreement. Idea is that let us take advantage of this organization and promote esports in a big way in this country. And why esports? I'll again emphasize, because esports have got access to every individual, whether poor or rich, whether he is in rural area or in urban area. That is one part. So, that means it has got access to everyone. And number two, it basically promotes cognitive abilities. Right. In today, the world belongs to knowledge, and in this knowledge based world, it is very necessary that we keep improving our cognitive abilities. Unfortunately, in spite of the fact that we are very intelligent people, this country, and in spite of the fact that we are 1.4 billion people in this country, our cognitive abilities may not be of a very high standard, and there is always a scope, because these can always be improved upon. And once we are able to improve the cognitive ability, they will be able to create new knowledge, new
opportunities for economic development, new opportunities for new and meaningful jobs as well. राइट सर, गेमिंग अपने में ही एक बड़ा इकोसिस्टम है जिसमें सिर्फ गेमर्स ही नहीं होते हैं, गेम डेवलपर्स होते हैं, उसमें एआई इन्वॉल्व है, वर्चुअल रियलिटी इन्वॉल्व है, उसको बनाने के लिए भी इंजीनियर्स चाहिए, आर्टिस्ट चाहिए. जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की बात करते हैं, क्या इस इंडस्ट्री को सीरियस प्रोफेशन लिया जा सकता है? डेफिनेटली हम लोग अपने आप को वर्ल्ड लीडर मानते हैं in IT, information technology. Everybody in the world recognizes that India is superpower in the area of information technology. लेकिन अभी तक हमारी जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उसमें जो हमारा कंट्रीब्यूशन, हमारा मीन्स इंडिया का कंट्रीब्यूशन है, दैट इज़ प्राइमरीली इन द एरिया ऑफ कोडिंग. कोडिंग इज़ अ लो लेवल जॉब. नाउ थिंग्स आर इम्प्रूविंग एंड थिंग्स आर गोइंग बियॉन्ड कोडिंग, because coding can be done using artificial intelligence also. तो आइडिया यही है कि अगर हम ई स्पोर्ट्स की मदद से बेटर क्वालिटी जॉब्स क्रिएट करें एंड दैट कैन बी क्रिएटेड वेरी इजीली फॉर आवर यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स, तो इसीलिए ई स्पोर्ट्स को हम आगे प्रमोट करना चाहते हैं, जिससे कि ई स्पोर्ट्स को बनाने के लिए भी हमारे यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स दे विल गेट एक्साइटेड, दे विल गेट motivated, and maybe with the help of the players, existing players in this particular area, they'll be able to develop new software for this. सर, ई स्पोर्ट्स स्ट्रीमिंग की बात करें, इवेंट ऑर्गेनाइज करने की बात करें, लार्ज अमाउंट ऑफ मनी इज इन्वॉल्व एंड इंडिया इज़ अ ग्रोइंग इकोनॉमी. फॉर बिजनेस डेवलपमेंट की भी बात करें, क्या कुछ एरिया में स्पेसिफिकली काम करना ज़रूरी है कि लार्ज इवेंट जैसे रियाद में वर्ल्ड ई स्पोर्ट्स कप हुआ वैसे ही सिमिलरली हम इंडिया में कर सकें? बिल्कुल मैडम, रियाद के पास बहुत पैसे हैं, हिंदुस्तान के पास हो सकता है कि दैट काइंड ऑफ मनी इज़ नॉट अवेलेबल, लेकिन हिंदुस्तान के पास एक बहुत बड़ी चीज़ है, दैट इज़ नंबर्स. जो नंबर्स हमारे पास हैं, एज आई सेड 1.4 बिलियन, आप रियाद में जाएंगे उनको 5,000 आदमी इकट्ठा करने में मुश्किल होता है. सो वी हैव गॉट ह्यूज ऑडियंस एंड ह्यूज गेमर्स ऑल्सो. आपको ये जान के ताजुब होगा कि करीब 3.23 बिलियन गेमर्स हमारे देश में हैं यहाँ पे. दैट मीन्स करीब 50% ऑफ पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड ई गेमर्स हैं हमारे यहाँ पे. राइट सर, टैलेंट की कमी नहीं है, स्किल की कमी नहीं है, इट्स जस्ट दैट हमें एवेन्यूज देने पड़ेंगे. और जो स्किल की आपने बात की ना, उस पर्टिकुलर काइंड ऑफ स्किल को हमें डेवलप कराना पड़े. राइट सर, डेफिनेटली. व्हाट इज SOGF as a federation doing that to create a safe and a competitive ecosystem for the players? Absolutely. As a federation, जो SOG हमारा फेडरेशन है, हम कोशिश ये कर रहे हैं और हमारा एंडेवर होगा कि हम ई स्पोर्ट्स को, ई गेम्स को प्रमोट करें, विच इज़ हेल्दी, विच इज़ एथिकल and which ultimately helps the society in creating jobs, in creating content, in creating knowledge and skills. That is our intention. So that unethical कोई भी काम नहीं हो. और जो एक connotation है ई गेम्स के साथ कि ये ई गेम्स आर नथिंग बट सम काइंड ऑफ अ गैम्बलिंग, ये बहुत ही बड़ा मिथ है. इस मिसकंसेप्शन हो सकता है बिकॉज हर टेक्नोलॉजी को आप यूज़ और मिसयूज़ कर सकते हैं. सिमिलरली ई गेमिंग को भी आप यूज़ कर सकते हैं फॉर प्रोमोटिंग गैम्बलिंग. Our idea and endeavor would be not to promote बल्कि to check gambling, और ethical जो गेमिंग है उसको हम प्रमोट करें. राइट सर, स्किल बेस्ड गेम के ऊपर काम करना, चांस बेस्ड गेम्स को नहीं इंक्लूड करना ई स्पोर्ट्स में. थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग आवर पॉडकास्ट टुडे. सर, हम ई स्पोर्ट्स की कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाएंगे. ई स्पोर्ट्स पूरा टेक्नोलॉजी ड्रिवन है और टेक्नोलॉजी की बात करें तो उसकी पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी होती है, नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी होती है. सर, इस टेक्नोलॉजी को एक्सेसिबल बनाने के लिए, सस्टेनेबल बनाने के लिए क्या कुछ एज अ फेडरेशन को काम करना ज़रूरी है एंड किस किस माइन्यूट डिटेल्स में काम बेसिकली करना ज़रूरी है? ऐश्वर्या जी, बहुत बहुत धन्यवाद. आपने मुझे बुलाया और आपने मुझे इस काबिल समझा कि आपको मैं इस पर बात कर सकूं. जैसा आपने कहा कि टेक्नोलॉजी और ई स्पोर्ट्स, टेक्नोलॉजी ड्राइव कर रही है ई स्पोर्ट को, जैसा आपने कहा. आज की डेट में टेक्नोलॉजी और ई स्पोर्ट्स का महत्व, इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है. ये ड्राइव ही नहीं कर रही है. ई स्पोर्ट्स की सक्सेस जो है वो टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट है.
ई स्पोर्ट्स मीन्स ई इलेक्ट्रॉनिक्स, दैट्स व्हाट ई स्पोर्ट्स इज कॉल्ड। तो टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट बहुत ज़्यादा है। आप इम्पोर्टेंस जब देखेंगी, आप देखेंगी पहले ई आया बाद में स्पोर्ट आया, तो आप समझ सकती हैं कि टेक्नोलॉजी का इम्पोर्टेंस कितना है इस स्पोर्ट में, जो कि स्पोर्ट इलेक्ट्रॉनिक्स मीडियम के द्वारा खेला जाता है। आज की डेट में जितना भी है, हम डिजिटलाइजेशन की तरफ बढ़े जा रहे हैं, सब डिजिटल होता जा रहा है, टेक्नोलॉजी प्ले करती जा रही है। सो वो जो ट्रेंड जो है वो गेम्स में भी आएगा। दूसरा ट्रेंड जो आ रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो आ रहा है, डेटा एनालिटिक्स का जो आ रहा है। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा एनालिटिक्स स्पोर्ट्स के हर क्षेत्र में बहुत यूज़फुल हो गया है। आप क्रिकेट बहुत पॉपुलर गेम है इंडिया के अंदर, हर प्लेयर पहले गेम मैच में जाने से पहले देखता है कि वो जो अपोनेंट प्लेयर है वो कैसे बॉलिंग करता है और कैसे करता है। वही चीज़ आपको लॉन टेनिस में मिलती है, वही चीज़ आपको बैडमिंटन में मिलती है, और हर स्पोर्ट्स में आपको ये मिलती है। प्लेयर जो होता है अपने पहले प्लेयर मैच खेलने से पहले अपने अपोनेंट का सब कुछ देखता है, उसको रोकता है, उसके मूव करता है। ये एक एस्पेक्ट है टेक्नोलॉजी का। दूसरा टेक्नोलॉजी का एस्पेक्ट है गेम्स के कंडक्ट करने में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। कितनी देर में किया, कितनी देर में नहीं किया। अगर कोई भी आप बड़ा गेम देख लीजिए, कोई भी गेम देख लीजिए, ओलंपिक्स देख लीजिए, कॉमनवेल्थ गेम देख लीजिए, या कोई भी आपका जो क्या कहते हैं ये टेनिस का मैच देख लीजिए, विंबलडन देख लीजिए, अगर टेक्नोलॉजी काम नहीं कर रही हो तो गेम नहीं होता है। टाइमिंग देखना, उसको माइन्यूटली उसको प्रोजेक्ट करना, नॉट ओनली कंडक्ट में बहुत ज़रूरी है, टाइमिंग कंडक्ट में। आज की डेट में जो अंपायर डिसाइड करता है क्रिकेट में कि ये LBW है कि नहीं है, उसको प्ले करके देखता है, थर्ड अंपायर करके देखता है, बॉल टच ही हुई कि नहीं बैट से। सो इज द केस लॉन टेनिस ऑल्सो, उसको फोकस करके दिखाता है। वो जो उसकी लॉन टेनिस में जो बॉल बाहर जा रही थी कि अंदर आ रही थी, बड़े माइन्यूटली देखते हैं। तो आज टेक्नोलॉजी का महत्व इतना बढ़ गया है कि कोई भी स्पोर्ट्स बगैर टेक्नोलॉजी के नहीं हो सकते। तीसरी बात जो महत्व है वो ये है कि आज ई स्पोर्ट्स और टेक्नोलॉजी का महत्व तीसरा ये हो गया है कि वो स्किल जनरेट करने के लिए यूज़ होता है। जो नए प्लेयर्स हैं वो उस ई मीडियम के थ्रू अपने आप को स्किल क्रिएट करते हैं। दे प्रिपेयर देमसेल्व्स, देन फर्स्ट दे प्रिपेयर ऑन द वर्चुअल मीडियम, देन एक्चुअली दे प्रिपेयर टू गो इन द फील्ड एंड वाइस वर्सा। इट जस्ट कीप्स ऑन गोइंग देयर। सो टेक्नोलॉजी का महत्व बहुत बढ़ गया है। जब महत्व बढ़ गया है, जैसा आपने कहा कि उसके पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी क्या है, मैंने आपको पॉजिटिव बताया कि टेक्नोलॉजी के द्वारा हम अपने आप को स्किल कर सकते हैं और जनरेट कर सकते हैं, अपनी कमियों को और अपने पॉजिटिव को अच्छे तरीके से पेश कर सकते हैं। अगर यही मीडियम रिलायबल नहीं होगा या रॉबस्ट नहीं हुआ तो जो मैंने बताया वो सब तो बेकार हो जाएगा। सो इन सब के लिए जरूरी है कि मेरे जो टेक्नोलॉजी जिसको हम यूज कर रहे हैं स्पोर्ट्स के लिए, जिससे ड्राइव कर रहे हैं सपोर्ट को, वो इट शुड बी रॉबस्ट, इट शुड बी a kind of reliable also, credible also. Right. एक्यूरेसी चाहिए मेजरमेंट के लिए। 1 सेकंड 2 सेकंड की बात होती है, क्रिकेट में बॉल आती है ऐसे निकल जाती है। रिलायबल चाहिए, रिलायबिलिटी, इंटीग्रिटी And accessibility. एंड रोबस्टनेस। एक्सेसिबिलिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, जहां टेक्नोलॉजी का दूसरा एस्पेक्ट है। अगर टेक्नोलॉजी रिलायबल नहीं है कोई तो कुछ भी उसका कुछ भी यूज नहीं है। तो टेक्नोलॉजी एक मल्टी थ्रेडेड काइंड ऑफ ए सिस्टम है ई स्पोर्ट्स में। इट इज यूज फॉर प्रमोटिंग द स्पोर्ट्स, फॉर स्किलिंग द स्पोर्ट्स, फॉर अपग्रेडिंग द स्किल ऑफ द प्लेयर। एट द सेम टाइम इट्स ए मस्ट दैट टेक्नोलॉजी शुड बी रोबस्ट, इंटीग्रल पार्ट, इंटीग्रिटी, एंड इट शुड बी इट डू ए फेयर प्ले, बिकॉज फेयर प्ले में टेक्नोलॉजी का रोल बहुत ज़्यादा है। अगर ऑनलाइन गेमिंग की बात करें, लैन इवेंट्स है जहाँ पे डिले भी हो सकती है इंटरनेट कनेक्शन में, अगर दूसरी कंट्री से प्लेयर एथलीट खेल रहे हैं, तो ये एस्पेक्ट को भी हमें ध्यान देना पड़ता है। इसके बारे में बताइए, इसे कैसे ओवरकम किया जा सके। आज की डेट में देखिए, मैं आपको बहुत सिंपल सी बात बताता हूँ। इंडिया और अमेरिका में या यूरोप में टाइम डिफरेंस है, ओके।
और डिफरेंट टाइम डिफरेंस कहाँ से आता है? सैटेलाइट के थ्रू आता है। सैटेलाइट में जब किसी भी कम्युनिकेशन में आता है तो उसको हम टाइम लैग बोलते हैं, ओके, लेटेंसी बोलते हैं, लेटेंसी के आने में थोड़ा टाइम लग जाता है। सो जो लेटेंसी है उसको हम करेक्ट करते हैं थ्रू एआई फॉर्मुलेशन के थ्रू, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू या टेक्नोलॉजी के थ्रू उसको सही करते हैं। आजकल एआई इंजन यूज़ होते हैं पर टेक्नोलॉजी होती है। तो जो आपने कहा उसमें भी हमको टेक्नोलॉजी यूज़ करनी पड़ेगी उसको करेक्शन फैक्टर देने के लिए, डिले को करेक्शन फैक्टर देने के लिए इस्तेमाल करना पड़ता है। तो सर ऑफलाइन गेमिंग तो एक ज़्यादा बेटर जरिया है। एशियन गेम्स जैसे बड़े इवेंट में भी ऑफलाइन गेमिंग को ही प्रेफरेंस दी गई, बट जैसे ही ऑनलाइन गेमिंग की बात होती है एक्सेसिबिलिटी बढ़ जाती है, मोबाइल गेमिंग आ जाता है, काफ़ी पार्टिसिपेशन होती है। एंड ऑनलाइन स्ट्रीमिंग की अगर सर बात करें, यहाँ पर क्या रोल इकोनॉमी का आ जाता है सीन, जहाँ पर स्ट्रीमिंग से लोग पैसे भी कमा रहे हैं। सो व्हाट यू हैव टू टॉक अबाउट दैट, उसको रेगुलेट कैसे किया जाए? स्ट्रीमिंग रेगुलेट तो देखिए आज की डेट में बहुत कन्वेंशनल सा हो गया है। वो राइट्स देते हैं, राइट्स के थ्रू इकोनॉमिकली पैसा अल्टीमेटली खर्चा होता है कि गेम्स करने के अंदर, तो आपको पैसा लेना ही है, रेवेन्यू यू हैव टू वन हैज टू जनरेट द रेवेन्यू टू मीट द एक्सपेंसेस, एंड दैट मीटिंग जनरेटिंग द रेवेन्यू इज important for sustaining the games also. Right, sir. The various aspects of games has happened. I have handled the Commonwealth game in the country. मुझे मालूम है स्ट्रीमिंग कितना खर्चा होता है और स्ट्रीमिंग में क्या कॉम्प्लिकेशन होती है। एक टाइम में कॉमनवेल्थ गेम हो रहे थे, 140 टेराबाइट ऑफ डेटा फ्लो कर रहा था। आप हो सकता नहीं समझे कि 140 टेराबाइट कितना होता है, पर मुझे बहुत मालूम है, बहुत ज़्यादा होता है। स्ट्रीमिंग में उतना ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ता है, एक सेकेंड के लिए भी डाउन हो गया तो बहुत हल्ला मच जाता है। Right. तो उसके एक्सपेंसेस बहुत होते हैं, रिलायबिलिटी रॉबस्टनेस के लिए बहुत एक्सपेंसेस होते हैं, तो रेवेन्यू जनरेट पड़ता है। रेवेन्यू तो जनरेट करना पड़ेगा, और रेवेन्यू जनरेट करने का चाहे तो जितना मर्जी करिए, फंडिंग तो फिर भी चाहिए, पर रेवेन्यू जनरेशन इज एसेंशियल फॉर सस्टेनिंग द promotion of the game, Right. for sustaining the games itself there. सर हाउ is इज very इंडिया important. रेडी फॉर दैट? इंडिया रेडी है इतना बड़ा मेगा इवेंट करने के लिए, और क्या कुछ किया जा रहा है? आप India is ready. India is now bidding for the Olympics also. We have done Commonwealth game, we have done Asiad also. इंडिया इज रेडी। 140 करोड़ आप पिछले ओलंपिक्स में देखिएगा कितने गेम्स हम कितने ही मेडल जीत के आए। नोबडी कुड हैव थॉट सो मेनी मेडल्स हैज वन अबाउट 10 years ago, even 5 years ago. Right. We have done. You look at the games which the Indian players are playing it. Indian players are very dedicated in every field. सर फुटबॉल की बात करें, हमारी ट्रेडिशनल स्पोर्ट फुटबॉल में इंडिया की रैंकिंग भले कम हो, पर ई स्पोर्ट्स में फीफा एफसी में हमारी रैंकिंग अच्छी रही है, और एशियन गेम्स में हमारा मेडल भी आया है, पोडियम। तो सर अगर अभी आगे की बात करते, क्या ट्रेंड सेट कर रहा है इंडिया ई स्पोर्ट्स के लिए स्पेसिफिकली, एंड इंडियन फेडरेशन जितने भी है वो कैसे इकट्ठे होकर काम कर रही है? देखिए आज हमारे 440 मिलियन 500 मिलियन के आसपास ऑनलाइन गेमर्स हैं। मैं ऑनलाइन गेमिंग की बात कर रहा हूँ, ई स्पोर्ट्स की बात नहीं कर रहा हूँ। उन 440 मिलियन में काफ़ी ऐसे हैं जो किसी किस्म का गेम खेलते हैं, चाहे वो क्रिकेट देखते हों या फुटबॉल देखते हों। मैं अपने लड़के की बात करता हूँ, मेरा लड़का अटॉर्नी है, वो और वो जब भी टाइम मिलता है फुटबॉल मैच देखने चालू हो जाता है। मेरा बड़ा लड़का जो है वो क्रिकेट देखता है। वो तो बच्चे जो हैं दे आर टेकिंग लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन द गेम्स, ऑनलाइन गेमिंग there. So I think the future is bright. I said 440 million. Even if we are able to engage 100 million people, look at the massiveness we are creating it. वर्ल्ड में किसी के पास नहीं हुआ। Right. एंड मुझे लगता है कि कोई भी ऑनलाइन गेमिंग करे, कोई भी ऑनलाइन करे, किसी मैच में, फुटबॉल में, क्रिकेट में, लॉन टेनिस में काफ़ी इंटरेस्ट है बहुत लोगों का। एक्चुअली में कोई मीडियम नहीं है, सिस्टमेटिक स्ट्रक्चर अभी नहीं हुआ है, तो एज बैरियर नहीं है, हाँ जेंडर बैरियर नहीं है। तो आई थिंक मुझे लगता है एसओजी ने एक बहुत बड़ा काम किया है, जो इस करके इसको एक फोकस और एक प्लेटफॉर्म दिया जो चाहिए था। कुछ तो सीड चाहिए होता है ना, वो एसओजी ने काम करके बहुत अच्छा किया। इकोसिस्टम की उन्होंने एक प्लेटफॉर्म किया है जहाँ लोग आते हैं, और एक सिस्टम इसको क्रिएट करने में एक स्ट्रक्चर करने की उन्होंने किया, जो स्ट्रक्चर आगे बढ़ेगा, विच वॉज वेरी मच नीडेड फॉर क्वाइट सम टाइम। Yes, sir. I mean, look at the target which potential the country has on the e-gaming sector, and I'm sure, I think SOG
under the leadership of Mr. Nandan Jha will achieve. सर डेफिनेटली एंड इंडिया में पोटेंशियल काफ़ी है और ये देखने को मिल भी रहा है, इतनी बड़ी इंडस्ट्री है एंड हमारी पॉपुलेशन भी स्किल की कमी नहीं है, टैलेंट की कमी नहीं है एंड वी हैव शोन आवर मेटल इन द एशियन गेम्स आंसर दिस टाइम. तो डेफिनेटली जो आगे के गेम्स आएंगे उसमें भी हमारा प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहेगा. थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग अस टुडे. Thank you very much.